Welcome to this lecture. In the previous lecture, we have discussed solvable groups, its definition and some of key results, and also we have proved these results. इस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटर सबग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. These are a special kind of subgroups of a group. इसको पढ़ने के लिए we will determine some special kind of elements in G. Okay. So let us start with the definition of commutators in a group. Okay. So the definition, and this definition will define commutators. Commutators in a group. So when we call some kind of group as commutator, some kind of elements as commutators of for groups. So let me write, let G be a group, an element G in G is said to be commutator if G equal to A inverse B inverse for elements A and B in G. ठीक है. Or you can define, let G be a group, then the elements of the form A, B, A inverse, B inverse, where A and B are element of G are known as commutators. Okay, commutators in group G. Okay, now since we have a group G और इसके अंदर हमारे पास ये कम्यूटेटर्स है सपोज, तो इनको कंटेंट करने वाले हमारे पास कुछ ग्रुप्स भी हो सकते हैं. ये एक सब ग्रुप है जी का जो इसको कंटेंट कर रहा है. ये दूसरा सब ग्रुप है जो इन सारे कम्यूटेटर्स को कंटेंट कर रहा है. और सब ग्रुप्स भी हैं, सपोज ये सब ग्रुप है जो कि इन सारे कम्यूटेटर्स को कंटेंट कर रहा है. ठीक है. सो इन सभी सब ग्रुप में से वी विल डिटरमाइन दैट सब ग्रुप which is the smallest one and contains all these commutators in G. तो ये जो ग्रीन कलर वाला सब ग्रुप है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर नाउ वी आर कमिंग टू दी डेराइव्ड ऑफ डेराइव्ड सेट. देखिए, whenever we have a group G, suppose we have a group G, this is group G, and जैसे ही हमारे पास ग्रुप G आया, we can talk about its derived subgroup. Suppose this is our G prime. अब इस G प्राइम की ही हम बात करते हैं. ठीक है, हमने यहाँ से क्या ले लिया, इस G प्राइम को बाहर ले लिया और अब हम इस G प्राइम की बात कर रहे हैं. दिस इज G प्राइम. अब G प्राइम भी तो अपने आप में ग्रुप है और जैसे ही ग्रुप है वी कैन टॉक अबाउट इट्स derived subgroup. So we are talking about G double prime, or you can consider it as G2. Now you can consider this G2 as outside. Suppose this is our G2. Again, this G2 is the smallest subgroup, contains all the commutators of G prime. This G prime is smallest subgroup that contains all the commutator of G. Again, you can have a subgroup G3. Now this G3 contains all the commutators of G2. So you can consider this G3. Okay, so likewise you can consider group, its commutator का commutator,
देन सेकंड कम्यूटेटर का थर्ड कम्यूटेटर का फोर्थ कम्यूटेटर, एंड लाइकवाइज यू कैन हैव सी, इस तरीके से आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. सो वी विल कॉल दिस एज जी के. ठीक है, तो ये जी के किसको रिप्रेजेंट करेगा? केथ डेराइव्ड सबग्रुप ऑफ के माइनस वन डेराइव्ड सबग्रुप ऑफ के माइनस टू डेराइव्ड सबग्रुप एंड सो ऑन. अल्टीमेटली हम जी पर आ जाएंगे. ठीक है, सो द सेंट्रल आइडिया इज द मोमेंट वी हैव अ ग्रुप वी कैन टॉक अबाउट इट्स डेराइव्ड सबग्रुप. और जैसे ही डेराइव्ड सबग्रुप है वो अपने आप में ग्रुप है, तो हम उसके भी डेराइव्ड सबग्रुप की बात कर सकते हैं. और यही प्रोसेस हमें देता है nth और द kth डेराइव्ड सबग्रुप ऑफ G. ठीक है, सो दिस इज द एट दिस स्टेज वी गॉट सेकेंड डेराइव्ड सबग्रुप ऑफ G. At this stage we got the third derived subgroup of G, and at this stage we got kth derived subgroup of G. So let me define the kth derived subgroup. So we are writing kth derived subgroup of G. So this says let G be a group. G be a group. The subgroup, which subgroup? Derived set of G का derived subgroup of G का derived subgroup, and we are calling this as G2. ठीक है, is called the second derived subgroup of G. ठीक है, and inductively we define G K and call it kth derived subgroup of G. ठीक है,